Hello everybody, how are you? So today in this video we will be discussing about farming practices. So in this video I will just give you the brief introduction of farming practices, and the next video I will be discuss about the farming practices in Madhya Pradesh. So farming practices introduction. Okay, so in मध्य प्रदेश में क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स जो है दे स्टार्टेड टेकिंग इनिशिएटिव रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग और वो सस्टेनेबल फार्मिंग करना चाहते हैं ताकि उससे लैंड को नुकसान ना रहे और उनके जो रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबली ग्रो कर सकें, सस्टेनेबली वो प्रोटेक्ट रहें। तो नाउ दे हैव टेकन द इनिशिएटिव रिगार्डिंग सस्टेनेबल फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जो हमारे जो वेस्ट मटेरियल होता है लाइक एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट और सम बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सो इन सब से जो होता है दैट ऑल दिस इंक्लूड्स अंडर दिस organic farming. Like through organic farming is done through organic waste, and organic waste come from these animal waste, plant waste, and these some beneficial microorganisms. So farmers sustain their agricultural resources and its communities by bringing the good practices, like sustainable practices लेके आते हैं वो, to protect their agricultural resources and communities. वो ऐसी tactics, ऐसी methods को adopt करते हैं that would be the profitable also, and second thing that would sound good for the for communities, and that would be sustainable. Actually, what all three things we need to keep in mind, जो profitable भी हो, जो sustainable भी हो, और which sounds good for the environment also, like कि जो harm ना करे environment को. However, क्या होता है ना कि कुछ कभी-कभी समवेयर फार्मर्स को कम यील्ड मिलती, कम प्रोडक्टिविटी हो पाती। क्यों? मे बी दे वोंट एबल टू यूज़ द एचवाईवी सीड्स, दैट इज़ हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। अगर वो अच्छे से हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को यूज़ करेंगे तो उसका उनका जो प्रोडक्शन है, उनका जो फार्म लैंड पे जो यील्ड है, दैट वुड डेफिनिटली इंक्रीज़। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, you guys could you tell me, like, you know, what's up first state who adopted totally organic farming? ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरा 100% अडॉप्ट किया है? If you guys know this answer, so please, you know, type in a comment box, and if you don't know, so just, you know, type it, I will reply. Now, as we know, like, according to the data, nearly 40% जो टोटल फार्मिंग है वो अपनी ऑर्गेनिक हो चुकी है, इन विच अराउंड 2000 विलेजेस में से 313 ब्लॉक्स, जो विलेजेस के जो होते हैं ना, विलेजेस के अंदर जो 13 ब्लॉक्स होते हैं, छोटे छोटे जो एरिया होते हैं, they all have adopted this organic farming. They all wanted to grow their crops in a sustainable way. They all wanted to adopt sustainable tactics which will not even harmful for the environment and which will sound good for the environment also. So sustainable agriculture that actually fits in this modern technique, that is, you know, organic farming. So it will help to recognize the actual value of the producers, like, because like how they are growing their crops, how they are cultivating it, what kind of techniques they are using it, and how is their product. Definitely अगर आप sustainably grow करोगे, through organic farming करोगे, तो आपके products भी उतने ही ज़्यादा अच्छे दिखाई देंगे as compared to if you will use any synthetic or any chemical fertilizers or, you know, fungicides and all. Now, so farmers are very specific about their practices. Like, they're very specific, like how they used to, you know, respect their land. वो अपनी धरती माँ की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, how they used to respect their plant, how they used to respect their animals, and what kind of approach they are using to farm, for farming, and what kind of techniques they are adopting it. Now, अब अगर वो सस्टेनेबल हो चुके हैं, अब वो ऑर्गेनिक भी हो चुके हैं, so now they hardly use, you know, any synthetic fertilizers, chemical pesticides and fungicides, क्योंकि ये सब नेचुरल नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल है, और ये हार्मफुल करेगा, इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है, लैंड के लिए इन्वायरमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, एंड अल्टीमेटली ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि जो एंड में जो प्रोडक्ट रहेगा, वी आर रेडी टू कंज्यूम इट, राइट? हम लोग उसको कंज्यूम करेंगे। तो फार्मर्स आर हार्डली यूजिंग ऑल दिस नाउ, बिकॉज I have told you, like, 40% of the village now, they have taking initiative to adopt this organic farming through sustainable farm. Now,
फार्मर्स ऑब्टेन देयर सीड्स फ्रॉम द रीजन सीड कंपनीज। यहाँ पे अपने मध्य प्रदेश में फार्मर्स अपनी सीड्स को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? रीजन सीड कंपनीज पे, रीजन सीड कंपनीज। एंड दीज मेजोरिटी ऑफ द सीड्स आर वेरी नेचुरल, वो अच्छी होती हैं, वो ऑर्गेनिक होती हैं, और दे आर वेरी ओपन पॉलिनेटेड। मतलब कि क्या होता है ना, कभी कभी हम जबरदस्ती पॉलिनेशन करवाते हैं कुछ सीड्स का, कुछ ऐसे करके, बट दे आर वेरी ओपन पॉलिनेटेड। That means farmers are not using genetically modified organism seeds. What I have told you just now, please keep remember, it's very important. Genetically modified organism seeds. ये जो seeds होता है ना, बहुत artificial होता है, like that would has a negative impact for the environment as well as for the human being, because ultimately at the end we are the consumers who will consume these seeds, who will consume for our purpose. So all we are using here is organic seeds, which we are taking it from the region seed companies, and they are very good for us. And nowadays farmers are using crop rotation. Crop rotation, I have to explain you, it is one of the types of cropping pattern. अगर आपने मेरी previous video देखी होगी तो इन cropping pattern में one of the pattern है ये crop rotation. Crop rotation क्या होता है ना कि जैसे कि सपोज करो हमने एक पीस ऑफ लैंड है, पहले हमने उस पर वीट उगाया, फिर हमने राइस उगाया, फिर हमने सोयाबीन करा, फिर हमने मेज किया। तो हम जो एक पर्टिकुलर लैंड पर ही हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप उगा रहे हैं, ठीक है। आज चलो हमने ये पहले ये उगा लिया, मतलब विद इन अ ईयर और आफ्टर जितना भी उसको टाइम लगता है ग्रो करने के लिए, पर हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को क्यों उगा रहे हैं? पहले हमने वीट उगा लिया, फिर हमने राइस उगा लिया, फिर हमने मेज उगा लिया। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? टू इंक्रीज द फर्टिलिटी, टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट ऑफ द सॉइल। अगर हम एक ही एक क्रॉप को एक ही लैंड पे उसको करेंगे तो उससे सॉइल की फर्टिलिटी और लैंड की प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ेगी ना। So that's why we are using this crop rotation method. So farmers अब क्या कर रहे हैं, उस crop rotation methods को वो बहुत अच्छे से adopt कर रहे हैं, and they are using the organic manure instead of the urea fertilizers. अब जो urea fertilizer जो बहुत artificially बनता है ना, उसको use ना करते हुए now they are moving towards the organic farming. So they are using organic manure, organic compost, right? Compost is what the organic manure, which is made it from biomass and all. So now farmers have grow variety of the fruit, flowers and vegetables. According to the data, as far as I know, so 150 vegetables and flowers they have grown. So अब ये जो biodiversity है ना, that will help to protect the field from the pest and from weeds. Pest pressure, what, like unwanted plants जो होते हैं, जो grow कर जाते हैं। तो यदि हम लोग ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी और ज़्यादा वेराइटी ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स एंड फ्लावर्स को ग्रो करेंगे, तो और वेजिटेबल्स को भी ग्रो करेंगे अलॉन्ग विद द फ्लावर्स उसी सेम फील्ड पे, so that will help to protect the field from this pest and other kinds of diseases. Now farmers they are depend on mechanical and manual cultivation. Okay, मतलब अब वो इतना मशीन्स और इन सब का ना यूज ज्यादा करते हुए now they are moving towards manual cultivation, जो मतलब कि पहले जमाने में करते थे। अभी थोड़ा जो रिसेंट अभी जो आ गया है इसमें बट कुछ मशीन्स वगैरह अडॉप्ट कर रहे हैं, बट नाउ दे आर अगेन दे आर फॉलोइंग this organic farming and the sustainable approach. So they are using the mechanical and manual cultivation to minimize the beat pressure of the field. Beat pressure, that is I've told you ना, unwanted plants को remove करना, वो खुद हाथ से remove करते हैं। They even used to remove the eggs and insects from their plant, from their hand, like they used to do manually all these activities, right? So and they're using variety of the tactics to adapt to protect their crops from the constantly changing of their pest. Like कभी कोई पेस्ट, अभी ना कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, इन सबको थोड़ा सा मॉइस्चर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट बहुत पसंद होता है। To protect from this, farmers are adopting various tactics so that they could protect their crop field from all these things. And farmers are interplanting the flowers into the vegetable field. अब वो flowers को भी interplant कर रहे हैं, मतलब उसी same field पे vegetables तो हैं लेकिन वो flowers भी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक फील्ड है उस पर वो वेजिटेबल्स भी ग्रो कर रहे हैं, फिर फ्लावर्स करने की क्या जरूरत है, उससे उनको क्या बेनिफिशियल होगा? इट विल बी बेनिफिशियल बिकॉज फ्लावर्स हेल्प्स टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट विल हेल्प इन पॉलिनेशन। हम सबको पता है ना, पॉलिनेशन में वो हेल्प करेंगे, इसलिए वो अलॉन्ग विद द वेजिटेबल्स दे आर इवन ग्रोइंग द फ्लावर्स ऑल्सो इनटू द सेम फील्ड। एंड अब हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है इन सब चीज़ों को और ज़्यादा अपलिफ्ट करने के लिए और ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाने के लिए। सो एमपी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड एग्रीकल्चर कैबिनेट।
उन्होंने एक एग्रीकल्चर कैबिनेट कमेटी सेटअप की है, दैट इज कॉल्ड द कृषि कैबिनेट, एंड दे मेड अ सेपरेट फार्मर वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो इन सारे इश्यूज को और इन सारी चीज़ों को जो टैकल करेगा। तो उन्होंने वो एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया है जो सिर्फ फार्मर्स के वेलफेयर को देखेगा और फार्मर्स के सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं और हम उनमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सिर्फ उन सबको वो मतलब उन सबको वो जज करेगा, उन सबको देखेगा और उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमको चाहिए उन सबको वो आगे जाके देखने वाला है। सो एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू दैट एमपी रिसीव्ड कृषि कर्मण अवार्ड ड्यूरिंग द 5th consecutive year। 5 साल से मध्य प्रदेश को ही कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू कुड इवन राइट इन अ मेंस एग्जाम कि मध्य प्रदेश को 5 साल से कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है। तो ये बहुत अच्छा अप्रोच है, मतलब कि मध्य प्रदेश में लोग जो है, फार्मर्स जो है, नाउ दे आर बिकमिंग मोर सस्टेनेबल, नाउ दे आर बिकमिंग now they are taking more initiative to grow their crops through organic practices, through sustainable practices. So this is what I have given you the general introduction regarding the farming practices. Now in the next video, I will give you the introduction regarding the farming practices in Madhya Pradesh. So if you like my video, so please don't forget to share and subscribe it. And if you have any doubt regarding this topic, so don't forget to type in a comment box. I will definitely reply. Thank you.